are drawn co-initially from a point forming two adjacent sides of a parallelogram. Two adjacent sides of a parallelogram. Now let it be, suppose I am just showing the vectors over here. Let this one be vector A and this would be the vector B. दो वेक्टर्स जिन्हें ऐड करना है हम उन्हें पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे करते हैं. ये दो वेक्टर्स मैंने साथ में बना दिए. अब इनका सम क्या होगा वो देखना है हमें. रिमेनिंग टू साइड्स. नाउ we draw remaining two sides from terminal points of A and B, vector A and vector B, obviously parallel. Now the diagonal from the co-initial point, वो पॉइंट जहाँ से हमने वेक्टर्स को बनाना शुरू किया था उनका को-इनिशियल पॉइंट, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स एक ही जगह पे रखेंगे हम. फ्रॉम द को-इनिशियल पॉइंट द डायगोनल गिव्स द सम ऑफ द टू vectors. You can write sum of the two vectors. Okay, now I am drawing it. मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है वो. हमने यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B लिया है. Now I am moving over here. Let us take a point O. यहाँ हमने O point लिया. From here, one thing to be noted: you don't have to change the directions of vectors. You can't change it. Vector A be represented by OP और वेक्टर B को हमने represent कर लिया OQ से. दिस इज वेक्टर B एंड वेक्टर A, दोनों के एक ही कॉमन इनिशियल पॉइंट है. नाउ फ्रॉम Q द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर B, यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वेक्टर A और यहाँ एक ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वेक्टर B. लेट देम मीट एट पॉइंट R. ओके, या OP represents vector A and OQ represents vector B. QR parallel to OP and PR parallel to OQ. The diagonal drawn from the co-initial point, that is O. O से वो diagonal हमें draw करना है. From O we are drawing the diagonal, that is the co-initial point. R equals vector A plus vector B. Here the diagonal diagonal OR. Now vector OR is equal to vector OP plus vector PR. It is similar to triangle of vector addition. Maybe हम triangle draw करते थे, two sides forming the triangle, third side enclosing the triangle gives the sum of the two sides, that is the two vectors. Okay, here vector PR is equal to vector B, opposite sides equal and parallel. Yeah. So in triangle OPR we have vector OR equals vector OP plus vector PR, that is equal to vector A plus vector B. Also in triangle OQR, अगर हम OQR को देख लेते हैं, here OQ that is equal to vector B and QR, vector QR that is equal to vector A, are in same order,
same order, vector OR, vector OR is equal to vector OQ plus vector QR using triangle sum property of vectors or law of vectors. So triangle sum property of vectors, or you can say triangle law of vector addition. Now same way, as you can see, same way, now magnitude of OR, the magnitude of OR be R, that is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta, where जहाँ theta जो है, theta is smaller angle between vector A and vector B respectively. See, as you can see here, this is the angle between vector A and vector B. Let this be theta. Same, remaining everything we have to follow as per triangle law of vector addition. Now the polygon law of vector addition. When we have more than two vectors, three or more than three vectors, तीन या तीन से ज़्यादा vectors हैं, for three or more than three vectors, we use this law, which is basically triangle law. How? I'm just showing you. According to this law, इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है ये देख लीजिए. This law, vectors to be added are taken in same order. Same order का मतलब ये हो गया, एक जहाँ एंड करता है दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू होता है. The terminal point of one vector acts as the initial point of the next vector. Taken in same order, form sides of a polygon. इस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी? इस पॉलीगन की साइड्स जितने वेक्टर्स को ऐड करना है उससे एक से ज़्यादा होगा. इन ब्रैकेट आई whose number of sides is one more than number of vectors to be added. Number of vectors. Only in one case, अगर ये सारे अल्टीमेटली इनक्लोज करते होंगे तब पॉलीगन के साइड्स और नंबर ऑफ वेक्टर्स दोनों इक्वल होंगे. अदरवाइज दिस विल फॉलो. इन दैट केस, जिस केस में हम पॉलीगन की साइड और वेक्टर्स की साइड इक्वल होती है, यू विल हैव द अल्टीमेट रिजल्ट एज जीरो. जीरो विल बी द सम ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि जहाँ से चलेंगे फिर वहीं पहुँच जाएंगे उसमें. नाउ लेट अस सी. लेट्स टेक थ्री वेक्टर्स. आई एम टेकिंग वेक्टर ए, vector B and vector C. Three vectors हमने ले लिया. Okay, let us start from, we take an initial point O. O से हम स्टार्ट करते हैं. Let OA represent vector A. AB represent vector B. BC represent vector C. Then resultant is this. Vector R equals vector A plus vector B plus vector C. Okay. So we'll proceed further about the statement of this one, polygon law of vector addition. Previously we have stated, फिर से बता दे रहा हूँ, according to this law, vectors to be added are taken in same order, form sides of a polygon. Now
the side of the polygon that encloses it, जो उसे बंद करता है, encloses it, is the sum of the vectors, it is in opposite order, in above case, ऊपर वाले केस में जो हम लोगों ने लिया है, in above case OC, vector OC is sum of vectors A, B and C. Here you can see it is in opposite order. Now, why is it so? ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल OAB को लेते हैं. Let us consider triangle OAB. We are considering triangle OAB. Okay. Now, let us consider triangle OAB. So, in triangle OAB, vector OB is equal to vector OA plus vector AB. That is equal to vector A plus vector B. It is same as triangle law of vector addition. Now in triangle OBC, again we have vector OBC, and this vector OC is equal to vector OB plus vector BC. आप देख सकते हैं वेक्टर OB किसके इक्वालेंट है? वेक्टर OB is equal to vector OA plus vector AB, that is vector A plus vector B. So vector OB की जगह हम लोग लिख सकते हैं, it is vector A plus vector B plus vector BC. We have considered here vector BC. Vector BC is representing vector C. Vector BC vector C को बता रहा है. So we can write over here vector A plus vector B plus vector C. Resultant vector R equals vector A plus vector B plus vector C. Again, these both things, they are taken from triangle law of vector addition. So ultimately we see that both the laws, polygon law or parallelogram law, both follow triangle law. So triangle law is the basic law for vector addition. If we know that, this will become easier for us.